Welcome to another episode, and today's topic is everyone's faking it, even the smart kids. What is it today about? The point is that all the time we keep comparing ourselves to someone else. We keep thinking that somebody else has it figured out. We don't. But that's not true. Most of the times they don't have it figured out. See, our society is so focused on creating a good image that we actually forget about the reality. We think, okay, I want a flat stomach, I want a six figure, I want to work in this company, I want my business, my startup, and that person has it all. I don't have it eh, at all. Like, I'll tell you that grass is always greener on the other side. Also, grass is greener when you water it. So, if you water your own grass, it might just get better. I'll tell you what, in schools what we used to have, yeah, I have my topics written on my tab, so I have to read it. So in schools what we used to have a clear structure. Okay, ये एग्जाम है, इसके लिए इतना पढ़ना है, इतने मार्क्स आने चाहिए, मम्मी पापा इंप्रेस रहेंगे, हम खुश रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम म्यूज़िक कर लेंगे, एम कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लेंगे, स्पोर्ट्स खेल लेंगे, मेरी इमेज बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत कूल हूँ. Now it's about money, now it's about job. The initial validation you were seeking was very surface level. It was like, इसको इस ग्रेड में अच्छा करूँगा, अगले वाले में अच्छा करूँगा, उससे बेटर करूँगा. It was that structure. And एक एग्जाम में कम आ जाना, it didn't affect your marks by much. And even if it didn't matter by much because end term का जो weightage होता है वो mid term से ज़्यादा होता है, right? So the structure was very simple. Your life was very simple. You had friends, blah blah blah. But in college, there is no structure. Professors actually don't give two shits about the fact if you're not studying, if you're studying, if you're scoring good on your midterms, if you're not, if you fail, if you don't fail. It's very common to fail. Nobody cares. Even people who fail have very good opportunities, and even people who have 9.6, 9.10, the fuck, 9.8, 10 CGPA, they have very shit jobs. Why? Because they lack the knowledge that is required in order to build a business, in order to get a better job. They just focused on the subjects, and that's not enough to get a job. So that leads us to कि एक प्री डिफाइंड पाथ नहीं है जब मेरे पास. दैट्स कंफ्यूजिंग टू मी बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू क्रिएट ऑफ माई सेल्फ. नाउ आई टेल यू that it's not easy, but it is doable. I'm doing it to some level. I am doing it. But don't feel like that you're behind on everything. Because inevitably you will be behind on something, but you will have better in respect to skills than somebody else. So let's say तुम web dev पे काम कर रहे हो या फिर तुम product building पे काम कर रहे हो. That is different than working on your academics or just working on your DSA. DSA से सिर्फ तुम्हें companies पहले राउंड में सिलेक्ट कर सकती हैं. दूसरे राउंड में तुम्हारे पास एक्चुअल डीप नॉलेज होना चाहिए अबाउट अ लैंग्वेज और वट एवर यू आर अप्लाइंग फॉर. आई एम जस्ट स्पीकिंग एज अ टेक पर्सन. And yeah, it's not like you need to have communication skills. You need to have a good resume to show them. Because मेरे resume में ना बहुत सारे projects हैं. मेरे CV में projects दिखते हैं that yeah, I'm working on different projects. And currently speaking, I am working with clients and I have different things that I do. I do photography and everything. And for that also, I have clients and I'm working with them. So what does that mean? मतलब ये तो temporary money है, but what does it set me to? I learn skills that are necessary in order to develop my own business, in order to develop something that I want. तो अगर तुम भी ऐसा कुछ करना चाहते हो ना, डू जस्ट एक्सपेरिमेंट. आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने फर्स्ट ईयर में यही गलती की थी. मैंने सिर्फ अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताया था. मैं रोई थी. आई डोंट नो सीजनल डिप्रेशन कहते हैं वो क्या कहते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर. And what I did was I didn't focus enough on getting out of my comfort zone. My comfort zone, like मेरे को public speaking में परेशानी नहीं है, मेरे को opportunities में परेशानी नहीं है. My problem is the consistency and keeping on searching and searching and searching even when you're tired. Opportunities ना बहुत जल्दी नहीं आती, लेकिन जब आती है ना तो just grab it. Because the point is कि if you don't grab it, somebody else will. And they will get better and you will just feel bad. That was because of your incompetence. So yeah, don't compare yourself to the outcome, compare yourself to the process, if you know what I'm saying. Also, there is one more important thing that I would like to tell you. In college, start networking, dude. Like literally start networking. Networks have proven to be so useful to me way more than my academic score. Like nobody cares about my academic score. Half the people don't even know my academic score. And the people who are actually getting better internships and better opportunities, they don't have that good of an academic score. तो ये जो लेवरेज है ना कि कॉलेज में हमें एकेडमिक स्कोर ठीक ठीक रखना है और स्कूल में हमें बहुत अच्छा रखना होता है, यू शुड कीप दिस इन कंसिडरेशन. टेल यू वन मोर थिंग. वन सेकेंड. यप. तो एक और चीज़ होती है फेक प्रोडक्टिविटी.
फेक प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहे हैं, मैंने इतने लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं यहाँ गया, मैं इस इवेंट में गया, मैं इस इंसान से मिला, मैंने ये स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ. डोंट बिलीव इट. Half of the time it's untrue. Half of the time the internship that they're saying that AI internship उन्होंने ले लिया है, they don't even know how to do it. Okay, so अगर तुम LinkedIn पे जा रहे हो ना तो सिर्फ इंस्पिरेशन लेने के लिए जाओ. थिंक इन माइंड कि what is this person doing that I can do, that I can learn from this person. I have created a mindset in which I think even if I think that there is another person who is in some lower college or like has less experiences in first year or in not even first year, 12वीं में 11वीं में मेरे से छोटा है इंसान, in any way if I think that, I just think okay, there might be something this person knows that I don't know and that I can learn. This puts you in such a humble perspective ना कि तुमको सब कुछ नहीं पता है, and admit the fact कि तुमको सब कुछ नहीं पता है and you want to learn कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है, right? I have one thing that I do is that I keep asking questions. अगर कोई सामने वाला मेरे को कुछ बता रहा है जो मेरे को नहीं पता, I just admit it कि भाई मेरे को नहीं पता, just please explain it to me. And if a person is nice enough na, they're open enough, open-minded enough, they'll explain it to you. And sometimes people are not as open-minded, so they just explain it to you in a way that makes you sound demeaned. Don't take it too hard. We are playing diplomatic. Just learn and go and use it on yourself. Because I'll tell you, there are a lot of things that school can't teach us, college can't teach us, but only we can teach ourselves by pushing ourselves. I know that looks cool. I think that looks cool. The behind that is my board. That's where I write for my examinations. Anyways, बहुत motivate कर दिया मैंने. On my own, I do deal with imposter syndrome sometimes. I mean, it's not diagnosed. That's what I think. It's this constant feeling of मैं enough नहीं कर रही हूँ. Just know if you think कि तुम enough नहीं कर रहे हो, ये बोलना will never solve it. Write it down. Write the things that you think are not doing, like you are not doing enough in your life. Like if I think ना कि मैं enough पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, like I'm not doing enough in life, that's so generic. जिससे अच्छा मैं enough पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, किस subject में मैं enough पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, then create an actionable plan कि अच्छा मुझे इतना घंटा पढ़ना चाहिए, इतना ये पढ़ना चाहिए, या फिर मैं इसमें वीक हूँ. ठीक है. दूसरी बात, अगर इसमें मैं देखूँ जैसे मेरा था कि मैं enough projects नहीं कर रही थी, तो I was like okay, मैं enough opportunities grab नहीं कर रही हूँ, मैं hackathons में नहीं जा रही हूँ. Hackathon is just a coding competition. तो I was like कि ठीक है, अब और करेंगे. तो that is the point. The only solution to imposter syndrome or feel like you're not doing enough is either reassure yourself on the fact that you are doing enough or do more. Literally, do more. And if you feel like the second option, doing more, doesn't satisfy you and you still feel like you're not doing enough, then you have to reassure yourself. Just write down the achievements you've had in the last year or something, or any daily achievement that you have, and just see, okay, मैंने आज ये किया, मैंने कल ये किया. I'm proving to myself that I'm confident and I'm reliable. One thing there is, 1 second. You have to be reliable for yourself, because only when you can rely on yourself, other people can. What do I mean by that? If you can't rely on yourself, how will your parents will? How will your siblings will rely on you? Think about it. And the reliability on your own self only comes from confidence, and that confidence come from saying मैं ये करूँगी और मैंने वो चीज़ की. अगर मैंने कहा मैं सुबह 5 बजे उठूँगी या 6 बजे उठूँगी, या फिर मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी और मैंने वो चीज़ की, दैट इज़ कॉन्फिडेंस. और अगर मेरे को मैं ये चीज़ 1 साल तक कर रही हूँ और मेरे को अगले दिन आके बोले कि क्या तू 5 बजे उठ के पढ़ सकती है, 6 बजे उठ के पढ़ सकती है, अब लाइक हाँ मेरा रोज़ का है. यू वोंट हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ. यू वोंट फील लाइक यार 6 बजे उठना है. It won't be a problem to you, and that should go with everything in your life. I read something on Pinterest that made me realize something amazing. Ki you are not flaky, you are not underconfident. What is wrong is your identity. Your identity is flaky. What does that mean? You think अच्छा यार, you joke about yourself कि okay I can't wake up at 6 a.m. ये तो मेरी आदत है, या फिर ये तो impossible ही है मेरे लिए. When you align all of these things to your identity, then that inevitably you are making yourself a flaky person. Don't say कि मैं इतने घंटे नहीं पढ़ सकती, पढ़ के दिखा दो. Like चाहे प्रोडक्टिविटी कम हो लेकिन कर दे भाई. तू बोल खुद को कि मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ. Even if you don't study for 6 hours, just say मैं 6 घंटे पढ़ती हूँ, मैं स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ. Even if you're not, your brain start thinking that and you start working in that way. So show up like a person that you want to become. That is amazing. And just keep on giving yourself efforts that prove to yourself that okay, that I can become confident. Confidence is straight up just like repetitive actions and you knowing that you can do it and you will do it. That probability. Anyways, moving on, there is one more thing. कई बार ना तुम करते रहते हो तब भी कुछ
लाइक आउटपुट नहीं दिखता, कुछ मज़ा नहीं आता, यू डोंट फील लाइक ओके इवन दो आई गेव सो मच ऑफ एफर्ट नथिंग इज कमिंग बैक. आई एम टेलिंग यू, फॉर द फर्स्ट हैकाथॉन आई डिड आई वन, एंड दैट सेट मी ऑफ टू ओके मैं तो हमेशा जीतती ही हूँ, मैं तो जीत गई. आफ्टर दैट ऑल ऑफ द हैकाथॉन्स दैट केम आई लॉस्ट ऑल ऑफ देम. अभी जो रिसेंट में मैं गई थी, आई हैव बीन सिलेक्टेड इन टू टॉप 5 फॉर फर्दर राउंड्स, बट आई लॉस्ट every time. It's not fun. But the point is, it taught me more than my winning. What do I mean by that? Now that I've created 3 more projects, like 3-4 more projects than the prior one that I had won, I realized कि वो वाला प्रोडक्ट तो बहुत शिट था. जीत कैसे गया मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जो अब मैं बना रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली बेटर. क्यों? क्योंकि आपका जीतना हारना दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्पिटिशन, लेकिन जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्पिटिशन, दैट इज सोलली योर ब्रेन एंड योर आइडिया. सो व्हाट आई एम सेइंग इज do more things and you'll realize okay, the thing that you want did not actually make any development into you. Your failures will actually make development into you, and the more you fail, the more failure will hurt less. What do I mean by that? कि जब आप नई चीज़ें करते हो ना और आपको वो एंग्जाइटी से आती है कि यार मैं नई चीज़ कर रही हूँ, यू नो आई एम नॉट यूज टू दिस, वो चीज़ आपके लिए डे टू डे थिंग बन जाएगी. अच्छा यार नई चीज़ें तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो इसमें नया क्या है? नया करना ही नया नहीं है मेरे लिए, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस टू यू. तो अगर कोई मेरे को कह रहा है कि यार आज तो 6 पुशअप मार दे, मैंने कभी नहीं मारे, मतलब मैं मार सकती हूँ बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो मैं ट्राई कर दूंगी कि क्या होगा, ज़्यादा सा नहीं लगेंगे, नीचे जाऊँगी ऊपर उठ के नहीं आऊँगी बस, और क्या होगा. the embarrassment that comes of starting something new is only in your head. I'm telling you why. Because when people see that you are being embarrassed, then they think in themselves okay, that person is embarrassed and this situation is embarrassing. You know what I do when I fail? I just laugh. And everybody is just confused why the fuck is she laughing at losing. And do you know why? Because they can't make me feel bad. And if somebody doesn't have the power to make me feel bad about my own failure, they have no leverage over me. So what I'm telling you is try new things. Don't be scared. The thing that should be scaring you is not trying new things, because in this time, college के time पे ना तुम्हारे पास एक सेफ्टी नेट होता है टू फॉल ऑन, दैट इज़ योर पेरेंट्स. लेकिन जब तुम जॉब करोगे ना वो सेफ्टी नेट हट जाएगा. वो जो प्रेशर आता है ना कि नहीं जॉब करना है, जॉब ढूंढनी है और नया कुछ ट्राई नहीं कर सकते बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी है, मनी कंस्ट्रेंट भी है, तब तुमको ना रिग्रेट होगा. तो अभी जो कर सकते हो कर लो. Genuinely saying, I'm trying out everything that I can. I am giving 100%, and that's what should be. Like, जो करना है करो, समझो, नई चीज़ें करो, find your interest. Even if the interest that you have has no relation to the degree you're doing, still do it. Still, you don't know what skill you learn from there that will help you in your own career. There have been so many skills that I've learned from other aspects of my life that has helped me in my career. Like editing वगैरह skills जो है, मेरे को assignments बनाने पड़ते हैं, मेरे को videos बनाने पड़ते हैं assignments के लिए, मैंने स्कूल में तो नहीं सीखा. That I learned from elsewhere. मेरी जो musical skills थी, even they come in handy. Like that's so crazy. And this is what matters. Even going to gym, that teaches you resilience inevitably. एग्जाम दे रही हूँ, मेरे को ही करना है बिकॉज मैं जिम गई थी ना, मैंने जिम जाके अगर मैं बोल सकती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे भी कह सकती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ. सो एज आई एम सेइंग, if you do something new, the new skill that you learn will inevitably have an impact on the other aspects of your life. One more thing, कई बार क्या होता है ना, जो लोग तुमसे कम एफर्ट डालते हैं तब भी तुमसे ज़्यादा ले जाते हैं. I'm telling you, it still annoys me because I know in my heart that I am putting in more effort. Why are they still winning? Why am I not winning? I'm telling you, ये परेशानी मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती है. But then I just change the perspective. I think कि okay, या तो ये सही में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और अगर स्मार्ट है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, मेरे को 4-5 घंटे और लगाने पड़ेंगे इस चीज़ में. या फिर ये इंसान ऐसी कोई ना कोई ट्रिक तो यूज़ कर रहा है पढ़ने में या कोई काम करने में जो मैं नहीं कर रही हूँ. अगर मैंने वो कर ली तो मे बी आई कैन गेट बेटर. People who are actually smart and people who use smart tricks. So I realized even though I'm not smart, I can actually use smart tricks. For an example, I'll tell you, पढ़ाई में ना मैं बहुत विजुअल लर्नर हूँ. मैं बुक्स वगैरह देख के नहीं पढ़ पाती, मेरे को नींद आ जाती है. मैं अलग से एक इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ लूँगी, एक दिन में ख़त्म कर दूँगी. लेकिन अगर मेरे को कोई मेरे सिलेबस की बुक पढ़ने बोलेगा ना, मैं बोलूँगी मेरे से नहीं हो रहा भाई, छोड़ो. ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट डू आई वॉच यूट्यूब वीडियोज़. आई यूज़ नोटबुक LM. एक AI है गूगल का, नोटबुक LM. इट्स
amazing. You should use it for studies because it helps you with the graphics and representation and audio is the best way of learning for me. तो ऑडियो वगैरह उसमें वो बना देता है जो भी आप इनपुट उसको प्रोवाइड करते हो. तो या these are the things that you have to learn for your own and you have to find out okay what actually works for you. तो जो लोग कम पढ़ के भी सीख लेते हैं उनका आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद पे काम कर सकते हो कि 4 घंटे और लगा दो एंड यू बिल्ड समथिंग ऑफ योर सेल्फ, राइट? नाउ what else is left? I feel like there is nothing more that I can tell you on this, that everybody's faking it because yeah, LinkedIn पे भी सब फेक करते हैं, Instagram पे भी सब फेक करते हैं. Instagram जो होता है ना उससे कभी कंपेयर मत करा करो. They are just the highlights of a person's life. ठीक है, मैंने ही बहुत बड़ी गलती की थी when I started using Instagram in 12th grade, नहीं कॉलेज में आके, because the point is right after seeing the highlights you feel bad, inevitably you're feeling bad because you're on the bed, but now you feel more bad because वो बंदा तो कॉन्सर्ट में गया है, वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है या फिर वो मजे कर रहे हैं. I am not doing it, I am just here in my house or just rotting in my bed. तो यार either तो you make plans for yourself, you find friends, you make plans for yourself, either you stop feeling bad. Because it's not that you have to share all of your moments that are good in life on the Instagram, but even if somebody is just appreciate that something good is going on in their life, don't compare it to yourself. Genuinely don't compare it to yourself because their life, their timeline is very different from you. And if you really feel like there is something lacking in your life, then change it. What do I mean by that? I mean बहुत generic एक मैं ऐसे sound कर रही हूँ ना, ये जो motivation speaker होते हैं, but no, I'm actually being very truthful. Like I didn't used to like the fact that मेरे दोस्त नहीं थे. I looked for wrong friends and they were actually very wrong friends. But later on I was like भाई छोड़ो, भाड़ में जाए दोस्त, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है? And then later on as life went on, I found people who I resonated with. So, and these are the people I would genuinely enjoy company of. And I feel like there are different attributes in my life कि मेरा एक दोस्त ना मेरी सारी चीज़ें नहीं समझ सकता, मेरे सारे skills नहीं समझ सकता. तो for different areas of your life, have different friends. And that is okay to have different types of friends. That it is okay to have like कि बकचोदी के लिए अलग दोस्त हैं, पढ़ाई के अलग दोस्त हैं, फोटोग्राफी के अलग दोस्त हैं, डांसिंग के अलग दोस्त हैं, कोई भी स्किल होगी आपकी, गेमिंग के अलग दोस्त हैं, ठीक है? तो that is perfectly fine. And last note which I started with, भाई प्लीज़ नेटवर्किंग करो. दोस्त नहीं, कनेक्शंस बनाओ भाई, कनेक्शंस बनाओ. वो इतने यूजफुल आएंगे ना कि one day you won't even realize that you have such amazing friends and such amazing connections that even if you have a problem कि नहीं यार मेरे को जीवन में ये चाहिए, मेरे को एक टेलीकॉम का बंदा चाहिए, मेरे को एक एयरटेल का बंदा चाहिए, या फिर मेरे को एक वो बंदा चाहिए जिसके माँ बाप आर्मी में हो, मेरे को कुछ ऐसा काम है, you just have to make a call. That's very powerful. That's very, very powerful. And on that note, I'm going to tell you to not feel bad about your life because you're on a path that is very different from somebody else. ठीक है, तुम्हारी जर्नी अलग दिखेगी. अगर तुम सही में काम नहीं कर रहे हो अपने जीवन पे तो काम करना चालू कर दो, ठीक है? लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को इनफ नहीं मिल रहा, just wait and watch. Everything is compounding on the surface. And with that, we'll take a leave. Bye bye.